Where the Adani stocks are right now in today's day of trading. The markets closed a short while ago, so let's show you the 10 stocks that trade on India stock exchanges and where they closed today. Take a look. Adani Enterprises was up 14.64%. Adani Ports 1.41% up. Adani Wilmar also 5% up. Adani Power and Green Energy were 5% down on the stock markets today. Meanwhile, Adani Transmission also marginally down. Adani Total Gas 5% down on the stock markets. NDTV, Ambuja Cements and ACC registered growth. They were up. So there's a 12,000 crore rupee increase in MCAP or market capitalization in the last 24 hours. So have things stabilized or is there still some turbulence ahead? Let's go straight across to business today's Sakshi Batra, who's been looking very closely, not just at the counters, but also all of the developments surrounding the Adani Group. Sakshi, looking at the counters and generally what's being heard from the markets, what did today look like? It's looking like it's going to be each day as it comes as far as the Adani Group is concerned. Absolutely, Shiv. You've hit the nail on the head. Each day as it comes, but today was definitely a slightly better day because after 8 days of continuous free fall that we've seen on the Adani Group stocks, the group finally seems to be gaining its footing on the stock markets after being hammered for more than 2 weeks following the report released by the US short seller Hindenburg Research. Now, the shares in the flagship firm Adani Enterprises rocketed as much as 25% today on an intraday basis, clawing back some of its recent huge losses after the group had mentioned that it would repay the pledged shares. So that was one reason why the stocks were jumping today. Of course, the recovery is also happening due to a variety of factors like the prepayment, the short covering and the technicals also. Apart from this, we also had three results that actually came about. Adani Transmission posting 73% of a rise on the net profit front. Ambuja Cement, the Q3 results posted 46% growth in the net profit front, 369 crore rupees as well. Although Adani Ports missed slightly the street estimates, but there is again, good assumptions that, Yes. Adani Green will also be posting some good results right there too. Remember that Adani Group lost about $1 billion in value after the report was released. But today's rise in Adani Enterprises and several of the other units that you also talked about, the losses have been down to $112 billion. And Adani is again climbing up the world's billionaire index, and it's back again in the top. Okay, very interesting. So things appear to be marginally stabilizing. Definitely a better day today than it has been over the last few days, especially after Hell Week last week. Sakshi Batra, thanks very much for joining us and keeping track of that story. Now we've shown you how the counters of the Adani Group closed on the stock markets. Let's get down to what happened in Parliament today, because that has been the epicenter of the real attacks and politics. No end, obviously, to the Adani storm, with Congress MP Rahul Gandhi, fresh from his Bharat Jodo Yatra, launching a scathing attack on the Modi government in Parliament on the Adani episode. Rahul Gandhi questioned how the net worth of Gautam Adani grew exponentially from 8 billion in 2014 to 140 billion in 2022. He focused his attack on the relationship between Gautam Adani and the Prime Minister. Take a look at the big takeaways, the highlights of what Rahul Gandhi said in Parliament. रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। तो नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, नियम में नहीं उनका अच्छा चेहरा दिख रहा बनाया है। है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है। अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी
2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजरायल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। व्हेन मोस्ट ऑफ इंडियाज बिजनेस वाज आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वाज अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, वन मैन stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. Didn't back down. That's commendable. He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat. Right? The idea that you bring these businessmen together, and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both. And he was the backbone in setting up that group of people. Now, after Rahul Gandhi's back-to-back attacks, Modi government ministers came out all guns blazing to dismiss the charges, obviously, against the Prime Minister as baseless. The Saffron Party has also released several pictures of Priyanka Gandhi's husband Robert Vadra's meetings with Gautam Adani, questioning their links. You can just imagine how many different loops this entire political fight is going into. Take a look. पोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं सर? ये यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं, ये देश के राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है सर। ये ऐसे नहीं बोल सकते, और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे। आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे, और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोर्ट करे सर। इस रोल के आधार पर ये इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं।